আজি আপোনালোকে গেত যে আমাৰ আহা 14-15 তাৰিখত আমাৰ অসমৰ সবতকৈ ডাঙৰ যেটো আমাৰ উদযাপন বিহু তাৰ বাবে আমি অসমৰ সমস্ত জাতি জনগোষ্ঠীক আমি বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলো গতিকে আৰু যাতে পৃথিৱীৰ লগতে অসমখনো যাতে শান্তিৰে গোটেই ৰাইজ গোটেই জনজাতি বসবাস যাতে শান্তিৰে কৰে তাৰ বাবে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত কামনা কৰিলো জয় অসম এটাই আমাৰ সৌৰ অসম জাতীয় যুৱ পৰিষদৰ कामना अपना लोग शुभेच्छा থাকিব बिहू हमारे असम का सबसे बड़ा त्योहार है। इसके लिए जो सांस्कृतिक पर्व है इसको सही तरीके से इसका पालन हो यही हम इसके लिए अपना शुभेच्छा देते हैं सबको हमारे असम वासियों को असम के लोगों को कि इसमें हर्षोल्लास मनाएं शांति बनाए रखें और किसी को किसी तरह का कोई तकलीफ न पहुंचाए यही हमारी कामना है। तो असम वासियों को बिहू की शुभकामनाएं दूंगा सुहाग बिहू की सबको बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं सुहाग बिहू सबके लिए मंगलमय हो सुहाग बिहू की शुभकामनाएं। हम ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल सन 2014 से चलाए हैं उसमें आज के दिन हम लोग के पास में 141 बॉयज है 19 गर्ल्स है टोटल 160 स्टूडेंट है और इस बार भी मैट्रिक का रिजल्ट भी हम लोग का बहुत अच्छा हुआ है 15 बच्चे एग्जाम दिए थे जिसमें 14 बच्चे पास हुए हैं ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सब अनाथ बच्चे हैं अनाथ बच्चे के हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं समाज के सहयोग से हम लोग उसको चला पाए हैं समाज का पूरा सहयोग है हम लोग के साथ में सहयोग से ही स्कूल चल रही है वो रेसिडेंशियल स्कूल है बच्चे का रहना खाना पीना पढ़ाई दवाई इलाज सब वहीं में होता है सब बच्चे अनाथ हैं मैं इसी के सामने आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिचय? मैं मुकेश कुमार अग्रवाल ज्ञानकुश रेसिडेंशियल स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ। অসমীয়া বাপুতিহন ৰঙালী বিহু উপলক্ষে সমূহ ত্ৰিজ্যবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ ওলগ যাচিছো আৰু আজি গৰু বিহু গতিকে এই গৰু বিহু কৃষিভিত্তিক উৎসৱ এই ৰঙালী বিহুত কৃষিজীৱী ৰাইজে এই বিহু উদযাপন কৰে আৰু চহৰবিলাকতো এটা পৰিৱৰ্তন হিচাপে এইটো বিভিন্ন পৰম্পৰাগত যিটো নীতি নিয়ম তাৰ মাজত ৰাখি এই বিহু উদযাপন অসমীয়া ৰাইজে পালন কৰি আহিছে আৰু এই বিহুতে জ্যেষ্ঠজনক যিটো শ্ৰদ্ধা সেৱা নিবেদন কৰি এই সমাজখনত যাতে এটা ভাল শিষ্টাচাৰ ভাল এটা সুসংস্কাৰ দিয়াৰ কাৰণে অসমীয়া সমাজে অতীজৰ পৰা এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে কনিষ্ঠজনৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ আৰু যি ভাতৃত্ববোধেৰে আমাৰ সমাজখনত সকলো ৰাইজৰ মাজত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ মাজত যিটো সমন্বয়ৰ যিটো মানে সম্প্ৰীতিৰ যিটো এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া ৰাইজে অতীজৰ পৰাই এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে আৰু অহাকলৈ মানুহ বিহু গতিকে এই বিহু গতিকে মই সকলো ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বহাগে আৰম্ভ কৰা এই ৰঙালী বিহু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকলৈ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাকে মই আশা প্ৰকাশ কৰিছো।